So hello students, today we are going to discuss about the nitrogen cycle. So it is the biogeochemical cycle that describes the transformation of nitrogen and nitrogen containing compounds in nature. See, in the nature we find nitrogen in the form of nitrogen molecule, that is N2. That is called atmospheric nitrogen. But the plants do not want nitrogen in the form of nitrogen, atmospheric nitrogen. They want to convert it and then they use it. And nitrogen is one of the most important component for the plant growth because it is the major macronutrient that you know, NPK, nitrogen, phosphorus and potassium. Okay, the first step of the nitrogen cycle is to fix that atmospheric nitrogen according to the requirement of the plants. So let us try to understand how do they fix atmospheric nitrogen in the form of nitrates and nitrites. So there are three ways to fix the nitrogen. Number one is biological nitrogen fixation. In the biological nitrogen fixation, there is a bacteria called rhizobium which resides in the root nodules of leguminous plants. Now what do you mean by leguminous plants? Leguminous plants are of like peas, मटर का plant जो होता है, pulses. So these are the plants where you find the bacteria called rhizobium. Okay, so this is one way to fix the nitrogen. Now this rhizobium takes the atmospheric nitrogen and converts it into nitrates and nitrites. I hope you are clear with this. Now the second mode of fixing the nitrogen, atmospheric nitrogen into nitrate and nitrite is during lightning. During lightning क्या होता है? जब lightning होती है तो atmospheric nitrogen combines with the available oxygen and it forms nitrogen oxide. तो nitrogen जब oxygen से combine करेगा तो nitrogen oxide बनाएगा. ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये अगर मान लीजिए रेन वाटर हो रहा है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जब पानी से रिएक्ट करता है, आई एम होपिंग दैट यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड रेन. व्हाट इट इज, व्हेन देयर इज एन एफिलेंट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज से जब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं एंड व्हेन दे डू कंबाइन विद द कमिंग रेन वाटर, देन इट फॉर्म्स एसिड्स लाइक नाइट्रिक एसिड or sulfuric acid. Okay, sulfuric acid and nitric acid are two acids which is formed during the acid rain. Okay, चलिए वो छोड़िए. Now let's come to this. So lightning के टाइम पे नाइट्रोजन कंबाइन होता है ऑक्सीजन से एंड नाइट्रस ऑक्साइड्स बनाता है, और ये जो ऑक्साइड है जब रेन वाटर होता है तो उससे कंबाइन होकर नाइट्रिक एसिड बनाता है. नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है HNO3. नाउ सॉइल के अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं which combines with the nitric acid to form nitrates. Okay, used by the plants. So this is another way. Third is industrial fixation. Industrial fixation in the sense वो लोग fertilizers बनाते हैं. There are many industries which produces fertilizers for the plants. So those fertilizers which consist of nitrogen in the form of ammonia, urea is very well known for the plant growth, and the ammonium nitrate, they are produced to be added to the soil. So directly जब ये fertilizers को add किया जाता है इसके अंदर, सॉइल के अंदर, सो इसको यूज करके ये लोग कन्वर्ट कर लेते हैं नाइट्रोजन एंड नाइट्रेट्स के अंदर. नाउ द सेकंड स्टेप ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल इज एसिमुलेशन. एसिमुलेशन मींस टू एब्जॉर्ब. व्हाट डज इट एब्जॉर्ब? नाइट्रेट्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स. प्लांट हमेशा, नोट दिस पॉइंट इन योर कॉपी, कि प्लांट कभी भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करता है, इट एब्जॉर्ब्स नाइट्रेट्स. ओके, नाइट्रेट्स को करता है and converted into biological molecules like amino acid, nucleic acids. इन एसिड्स में कन्वर्ट करता है जिसके थ्रू इसको मिनरल्स वगैरह मिलते हैं and it helps to in the growth of the plant. Okay, now let's try to understand how you get nitrogen. How you get in the sense कि आपको how plants convert atmospheric nitrogen into nitrates. एक साइकिल को समझते हैं. That process is known as ammonification. नाइट्रोजन आने के काफ़ी तरीके हैं. कभी कभी क्या होता है, कोई प्लांट मर जाता है, प्लांट या एनिमल डाई करता है, या फिर एनिमल के एक्सक्रीशंस में भी नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ट्रैप होता है. वो जब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सॉइल तक पहुंचता है तो देयर आर सम बैक्टीरियाज विच आर नोन एज सॉइल बैक्टीरिया विच हेल्प्स टू कन्वर्ट दैट ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया. तो बेसिकली क्या हो रहा है, अमोनिफिकेशन में क्या हो रहा है कि जो एनिमल, प्लांट या फिर जो एनिमल एक्सक्रीटा से नाइट्रोजन निकल रहा है, वो जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ सॉइल बैक्टीरिया. दैट इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन. नाउ जब ये अमोनिया बन जाएगा तो अमोनिया के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगी उस नाइट्रोजन कंपाउंड की, वो होगी नाइट्राइट्स. क्या होगी? नाइट्राइट्स. और उस नाइट्राइट के बाद
ये बनेगा नाइट्रेट्स. सो दिस वी हैव लर्न कि एसिमिलेशन में फाइनली जब नाइट्रेट तक पहुंचती है कहानी, जब साइकिल कन्वर्ट हो के नाइट्रेट तक, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सिंपल नाइट्रोजन से जब नाइट्रेट तक कहानी पहुंचती है, उसके बाद प्लांट क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है. प्लांट एब्जॉर्ब्स देन ओनली by the action of nitrifying bacteria. So there is a nitrifying bacteria which helps to convert ammonia into nitrites and nitrates. Plant को फिर जितना यूज करना होता है वो उसको करता है. And after this there is the last stage which is known as denitrification. Denitrification means that nitrate is going to convert again back into the N2. N2 से nitrate हुआ था और अब क्या होगा, nitrate से N2 हो जाएगा. So this was your nitrogen cycle. I hope you are clear with this nitrogen cycle.